हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम करने जा रहे हैं डिमांड कर्व एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ डिमांड। विलिंगनेस टू परचेज एट वेरियस प्राइजेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, able to purchase at various prices during period of time। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जितनी भी यूनिट खरीदना चाहते हैं और आपके पास खरीदने के लिए परचेजिंग पावर है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? डिमांड। यानी कि अगर आप किसी चीज़ को खरीदना के चाहते हैं यानी कि विलिंग है, तो दैट इज़ ओनली अ डिज़ायर। If your desire supported by purchasing power, then your desire converted into money, or you can then your desire converted into demand. See, if you want to buy a car but you don't have money to buy that particular car, this is only the desire, or you can say your willingness, unless and until you have money to buy it or you have other arrangement to buy it. If you have ability to purchase but you don't want to buy a particular product, that is only the ability to purchase, not the demand. For making anything into demand, we must need combination of two: desire or willingness to purchase plus having purchasing power. See, technically how we define demand. Demand refers to various quantities of a commodity that the consumer is ready to buy at different possible price of that commodity within a given period of time. एक given period of time में कोई भी पर्सन, कोई भी कस्टमर, कोई भी कंज्यूमर जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैरायटी, क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी होता है, उसे क्या कहते हैं? डिमांड। यानी कि डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी परचेज एट डिफरेंट प्राइजेस विद इन अ गिवन टाइम पीरियड। सी, डिमांड शेड्यूल। एज वी ऑलरेडी डिस्कस इन डेफिनेशन ऑफ डिमांड, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a consumer is ready to buy at different prices. If we show this definition of demand with the help of table, that table is called demand schedule. The table related to price and quantity demanded is called demand schedule. There are two demand schedule: individual demand schedule and market demand schedule. Individual demand schedule means if we are showing the data or demand of a particular person, one person you can say, or one consumer at different price of a commodity, is called individual demand schedule. As you see in slides, you have given price of ice cream and at different prices different quantity of ice cream purchase. If price of ice cream is ₹1, then the quantity purchase 4 units. If price increase to 2, quantity purchase 3 units. If price increase to 3, quantity purchase 2 unit. If price increase to 4, quantity purchase 1 unit. Means as the price of commodity increases, demand of commodity decreases. और अगर आप इसको टेबल फॉर्म में दिखाते हो तो उसे क्या कहेंगे? डिमांड शेड्यूल। एक बंदे का दिखाते हो तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, एक से ज़्यादा लोगों का दिखाओगे तो उसको क्या कहेंगे? मार्केट डिमांड शेड्यूल। एज यू कैन सी कि हमने सेम वही डेटा लिया है, प्राइस 1 2 3 4, मिस्टर ए का डिमांड 4 3 2 1, सिमिलरली बी का डिमांड 5 4 3 2। मार्केट का मतलब क्या है? अगर एक ही डेटा दिखाते तो वो इंडिविजुअल है। मार्केट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल।
सपोज हमारे एग्जाम्पल में 2 लोग हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, मार्केट शेड्यूल। 4 + 5 9, 3 + 4 7, 2 + 3 5, 1 + 2 3। इज दिस क्लियर टू यू? तो आई होप आपको समझ आ गया। यानी कि अगर आप एक कस्टमर का डेटा यानी कि उसकी डिमांड, उसकी क्वांटिटी डिफरेंट प्राइजेस पे शो करते हो तो वो है इंडिविजुअल। और एक मार्केट में जो डिफरेंट पर्सन है, सबका मिला के एक साथ जो डेटा दिखाते हो समेशन में डिफरेंट प्राइजेस पे, तो वो क्या है आपका मार्केट डिमांड शेड्यूल। सी, कम एट डिमांड कर्व। सी, आपने डिमांड शेड्यूल देखा। डिमांड शेड्यूल को जब हम ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं या कर्व की हेल्प से शो करते हैं प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन, तो वो क्या हो जाता है, डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पे, तो इंडिविजुअल डिमांड कर्व। और मार्केट डिमांड शेड्यूल को कर्व की हेल्प से आप शो करोगे तो वो आपका हो जाएगा मार्केट कर्व। सी, डिमांड कर्व, it is a graphic representation of demand schedule expressing the relationship between different quantities demanded at different possible prices of a commodity। सेम वही फंडा, यानी कि वहाँ पे टेबल से दिखा रहे थे, यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी का कॉम्बिनेशन किसकी हेल्प से दिखा रहे हो, ग्राफ की। अगर आप इंडिविजुअल डेटा को प्लॉट करते हो तो वो इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। सी, यहाँ पे क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी है और वाई एक्सिस पे क्या है, प्राइस है। और ये आपने शो कर दिया डिमांड कर्व। प्राइस 1, डिमांड 4, प्राइस इंक्रीज टू 2, डिमांड डिक्रीज टू 3, प्राइस इंक्रीज टू 3, डिमांड डिक्रीज टू 2, प्राइस इंक्रीज टू 4, डिमांड डिक्रीज टू 1। As you can see, demand curve has downward sloping. I told you in production possibility curve there are 3 types of curve. One is downward sloping, another is upward sloping, and a straight line. This is downward slope curve. Clear? Then if you are plotting the data of market, then this is called market demand curve. पहले आपने मिस्टर ए का प्लॉट किया टेबल से, फिर बी का प्लॉट किया और दोनों का जो प्लस करके आया था वो प्लॉट किया। तो दोनों को प्लस करके जो प्लॉट किया था ये क्या है आपका मार्केट डिमांड कर्व। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस द डेटा इन द टेबल। At different prices, demand of commodity is different. Price increases, demand decreases. Then come at demand function or determinants of demand. Means all the factor on which demand of a commodity depends. There are various factors on which demand of a commodity depends. Demand function shares the relationship between demand for a commodity and its various determinants. It shows how demand for a commodity is related to with its various determinants like income of the consumer, price of the commodity, etc. If we represent all the determinant of demand or the factor on which demand of a commodity with the help of a equation is called demand function. See, this is demand function. dx means demand of commodity x is equal to f for function, p for price of the commodity, r for price of related goods, y for income of consumer, t for taste and preferences, e for expectation of consumer, or you can say future expectation about price. See, one by one we are going to discuss all those determinants. There are various determinants. First one is price of the commodity. Second is price of related goods, income of consumer, taste and preferences. Then after that, future expectation about price, size of consumer group,
distribution of income. These are the different determinant of demand, or you can say the factor on which demand of a commodity depend. अब एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे. See, price of the commodity represented by PX. Price of a commodity and its quantity demanded has inverse relationship. Other things being equal means there is no change in other determinant of demand, price of related good, income of consumer, taste and preferences, and etc. All the other determinant of demand remain constant or fixed, or you can say equal. With the rise in price of a commodity, its demand decreases. And if with a fall in a price, its demand increases. When we are discussing a particular content, we assume the all other determinant or content constant. See, price of the commodity and its quantity demanded has inverse relation, means if price of a commodity increases, demand of a commodity decreases. If price of a commodity decreases, demand of a commodity increases. Is this clear to you? But this relation is only in case of PX, means when we are going to relate price of X with the quantity of X. You have to remember this. In price of the commodity, we relate the price of a particular commodity with the demand of that particular commodity by keeping other determinant of demand constant. See? Now come at price of related goods. Related goods are those goods in which price of one commodity related to demand of other commodity. Related goods are classified into following two category. Related goods वो goods हैं जिनमें एक goods का price और दूसरे गुड्स की क्वांटिटी रिलेट करती हैं. यानी कि अगर आप रिलेशन एस्टेब्लिश करते हो प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ वाई कमोडिटी, देन दीज टू आर कॉल्ड रिलेटेड गुड्स. मीन्स एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे की क्वांटिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ related goods, substitute goods and complementary goods. First we have to understand what is substitute goods. In case of substitute goods, there is direct relation between price of one commodity and demand of other commodity. In case of substitute, price of X directly related to demand of Y. See how and what are the example of substitute goods. Substitute goods, a pair of goods which can be used in place of each other. These are the goods which used in place of each other to fulfill a particular need, such as tea and coffee. Then there are lots of other things also, pen and pencil, and you can say different product, or you can say same product of different companies. एक प्रोडक्ट जो अलग अलग कंपनी प्रोवाइड करती है वो क्या है? सब्स्टिट्यूट गुड्स. फॉर एग्जांपल अगर मैं डिफरेंट कंपनीज़ की कार की बात करती हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ के लैपटॉप की बात करती हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ के राइस की बात करती हूँ, डिफरेंट कंपनीज़ के क्लोथ्स की बात करती हूँ, तो वो क्या है? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं. लोग अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज़ करते हैं उनको, बट वो सारे प्रोडक्ट जो एक ही जैसी नीड फुलफिल करते हैं, ब्रांड डिफरेंट है, ऑल कम्स अंडर सब्स्टिट्यूट गुड्स. In case of substitute goods, I told you, increase in price of one causes increase in demand for the other, or vice versa. See, in case of substitute, as we already discussed, there is direct relation. Means if price of X or price of one substitute increases,
then demand of other substitute increases, because that particular product not change their price and become relatively cheaper than the other product. Therefore, some customer of product X shifted to product Y. Similarly, if price of X decreases, relatively it becomes cheaper than other commodity and the demand of other commodity decreases. Means direct means one increase, other also increase. One decrease, other also decrease. But we have to remember, in related goods, price of one commodity is related to demand of other commodity. आपने देखा जब जियो आया तो जियो ने प्राइस अपने कम रखे सब चीज़ों के, कॉलिंग के, डेटा के, तो वोडाफोन, एयरटेल और बाकी सबको जो भी है अपने प्राइस को डाउन करना पड़ा. तो ये क्या है? डायरेक्ट इम्पैक्ट, डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि अगर वो प्राइस कम नहीं करते दे विल यूज देयर कस्टमर. Now come at complementary goods. In case of complementary goods, price of one commodity is inversely related to demand of another commodity. How inversely? If we are talking about two complementary Px and Qy, there are two commodity X and Y. Inverse means price of X increases, demand of Y decreases. Price of X decreases, demand of Y increases. See, these are a pair of goods which are used together to satisfy a given want. अगर आप एक गिवन वांट को या अपनी एक नीड को सेटिस्फाई करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ करते हो, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हो टू फुलफिलिंग अ पर्टिकुलर नीड और डिज़ायर, देन ऑल दोज गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. क्योंकि सबको साथ में लिए बिना आपकी जो नीड है, एक नीड है, वो पर्टिकुलर फुलफिल नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल. आप ड्राइव करना चाहते हैं तो आपको कार भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए. और यू कैन से बाइक एंड पेट्रोल, CNG, you can diesel, you can quote any example, but if you want to drive a vehicle, you need a vehicle and petrol, diesel or CNG. Bread and butter, etc. Increase of complementary goods. In case of complementary goods, a fall in the price of one cause a increase in the demand of other. जो मैंने आपको ये एरो से बताया वही चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट में बताई है. अगर दो चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी, और अगर एक का प्राइस कम होगा तो दूसरे की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी. नाउ कम एट इनकम ऑफ कंज्यूमर. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इनकम ऑफ कंज्यूमर, for study point of view, the impact of consumer income classified into two categories, because the impact of income is not same for each and every kind of commodity. Suppose if we are talking about first category, normal goods, for normal goods income effect is positive. What do you mean by positive? Income increases, demand increases. Income decreases, demand decreases. This is positive direct, or you can say relations directly related with each other. Inferior goods are those goods on which income effect is negative. Means income increases, demand decreases, income decreases, demand increases. But you can't classify a product as a normal or inferior goods. It will depend on the purchasing power of a particular person. Suppose I am taking the example of two persons, Mr. A and Mr. B. Mr. A using the combination of two products X and Y, but he has perception in his mind, if my income increases, I will decrease the demand of X and increase the demand of Y. For A, X is inferior goods and Y is superior, or you can say normal goods.
Similarly, if we talk about particular B person use the combination of two commodity Y and Z. X, Y and Z are substitute of each other. According to the income, Mr. B purchasing Y and Z commodity means some unit of Y and some unit of Z. But he has perception in his mind, if price of Y, if my income increases, I will decrease the demand of Y and increase the demand of Z. For B, Y is inferior goods and Z is normal goods. Means you can't say this is a inferior goods or this is a normal goods. It is depend on income of consumer or the impact on the demand of a commodity because of change in income of consumer. For A, Y is normal goods. For B, Y is inferior goods. So a particular good may be inferior or normal or general. It is depend on the purchasing power of the customer or the impact of change in income of the consumer on the demand of the commodity. Is this clear to you? Then come at description part. As we already discussed, there are two types of goods, inferior goods and नॉर्मल गुड्स. इन्फीरियर गुड्स आपको बताया कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव यानी कि डायरेक्ट है. इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. इनकम ऑफ द कंज्यूमर डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. उल्टा हो जाएगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस. इनकम ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. बट इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स रिलेशन इज नेगेटिव और इनवर्स. इनकम इंक्रीजेस, demand decreases, income decreases, demand increases. Now come at taste and preferences. Taste and preferences has direct relation on the demand of a commodity. If there is favorable change in the taste and preferences, means the thing which the customer will like, then the demand of a commodity increases. If there is unfavorable change in the demand of a commodity which consumer not like, then the demand of commodity decreases. Clear है? Then expectation, or you can say future expectation about price. Expectation or future expectation about price means the same. If there is the possibility to decrease the price of the commodity in future, then even the price of commodity at present is low, but consumer decrease the demand of a commodity for the expectation of decrease in price of the commodity in future. And if the customer able to postpone the demand, they will wait for the time when price of commodity decreases. Point to be noted, postponed. If they are able to postpone, अगर necessary goods है तो वहाँ पे ये particular law apply नहीं होगा, because necessary good में तो आप price कंपेयर ही नहीं कर सकते हो. आपको नीड फुलफिल करनी है तो आपको वो परचेज करना पड़ेगा जिस भी प्राइस पे अवेलेबल है. बट अगर ऐसी डिमांड है जिसको आप फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर सकते हो, आप अभी उसको अवॉइड कर सकते हो, जब चीपर होगा जब परचेज करोगे, देन दिस लॉ एप्लीकेबल. सिमिलरली, इफ देयर इज पॉसिबिलिटी टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन फ्यूचर, देन even at present price of commodity is high, consumer will purchase more at this high price because it may be possible the price of commodity will increase in near future. Clear है ये चीज? See, then size of consumer group or population size. More consumer, more demand. Less consumer, less demand. Demand increases with increase in population and decreases with decrease in population. This is because with the increase or decrease in population size, the number of buyer of the product
tend to increase or decrease. Composition of population also affect the demand. Its composition of population change. Example, female population increases, demand of goods means for movement will go up. Similarly, if more population of children, then demand for the product which children like increases, or so on. Then see, distribution of income. If there is equal distribution in a particular economy, then the demand created by the customer is more, because each and every one have the purchasing power or money. If distribution of income is unequal, means some people get more part of a increased income and some people get less part of the income, then they are not able to create the demand. Means in case of unequal distribution, demand is less, or you can say decreases. Or in other words, you can say when there is less unequal distribution, demand is more. When there is more unequal distribution, demand is less, because it is rarely possible then in a particular economy distribution of income is equal. It may be possible it is less unequal or more unequal. Less unequal, more demand. More unequal, less demand. Is this clear to you? See, market demand is also influenced by change in the distribution of income in the society. If income is equitably distributed, there will be more demand. If income is not equally distributed, there will be less demand, because more income will be collected in the hand of the rich. Large sector of the society will be poor, and because of its low income, market demand will also be low. मीन्स इनकम कुछ ही लोगों के हाथ में जा रही है, तो एक बंदा कितनी डिमांड क्रिएट करेगा किसी प्रोडक्ट की? जितने ज़्यादा लोगों के पास आएगी उतनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी. क्लियर है दोस्तों? अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसी टाइप के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए. चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.